5 से 7 सवाल, 5 to 7 क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। इस पूरा मॉड्यूल को एक मैराथन के रूप में, एक लंबे सेशन के रूप में हम देखने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, व्हाट आर द दोस टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जो हम आज समझेंगे वो पहले समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन से सवाल बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द कोर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी हम टॉपिक में जाएंगे तो पता चलेगा आपको। उसी के साथ नेशनल इनकम इज वन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर साल आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउ व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी अकाउंटिंग, व्हाट इज एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारा चीजें, ठीक है। Then we will be understanding slightly economic growth and economic development, ठीक है, economic growth and economic development। फिर उसके बाद हम समझेंगे इन्फ्लेशन रिलेटेड टॉपिक। इन्फ्लेशन बात करते करते ही we will be understanding the monetary policy and fiscal policy। यहाँ से सवाल बहुत पूछेंगे आपसे, monetary policy and the fiscal policy। Then we will be understanding, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर ही हम बजटिंग, टैक्सेशन, ऑल दिस टर्म्स वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। उसी के बाद वी विल बी अंडरस्टैंडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड नीति आयोग, क्योंकि प्लानिंग तो खत्म हो चुका है, नीति आयोग से सवाल आएंगे आपको, ओके। आफ्टर दैट वी विल बी एंटरिंग इनटू द कोर एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। सो दे आर दोज ब्रॉड एरियाज विच वी विल हैव टू कवर। उसी के साथ बजट 2023 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्कीम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दैट वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट मॉड्यूल और अ डिफरेंट मैराथन ऑल टुगेदर, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। Who is called the father of economics? यदि आपसे कोई पूछेंगे, कोई मतलब आपसे यूपीएससी ही पूछेंगे। So if you understand very detailedly, Adam Smith is known or regarded as the father of economics, ठीक है। जब मैं ये बात बोलूंगा कि Adam Smith is the father of economics, another important thing need to be noted here is that when different definitions we'll understand, जैसे कि wealth definition, welfare definition, okay, different definitions of economics। कोर कुल मिला के यदि आपसे कोई पूछेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर इट इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर बाय अ डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड सब्जेक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू द कोर डिमांड and according to what we supply is practically known as economics, ठीक है। Economics can also be defined as a scarcity, to chase the scarcity in the economy, in the country we will have a subject called economy, ठीक है। scarcity का मतलब क्या है? For example, यदि मेरे से कोई पूछेंगे कि एक क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो मुझे दिया गया है 10 चॉकलेट, 10 चॉकलेट्स दिया है, ठीक है। तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट 1 ईच। यदि चॉकलेट्स तो 10 ही हैं लेकिन बच्चे 15 हो गए, ठीक है, फिर भी ये विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू देम। यदि 20 बच्चे हो गए, आधा आधा करके 20 बच्चों पे भी मैं बांट दूंगा। तो इवन दो देयर इज अ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, with the limited resources available, I am chasing that unlimited demand, उसको भी हम economics कहेंगे। और a subject which will be dealing with the idea of growth and development, subject which deals with the idea of growth and development, उसको भी हम economics ही कहेंगे, ठीक है। the subject which deals with welfare of all, that is also known as the economics, okay। So what we will have to study, is it economics or else economy,
ठीक है, अंडरस्टैंड थिंग्स. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इफ somebody asks you the difference between economics and economy. Okay, so economics is nothing but it is a scientific approach. Scientific approach. When we deal with the microeconomics related things, national income and other things, अभी जो हम बात करेंगे, that are all scientific related aspects. But something which is practical, the issues ongoing in the country, the problems that are associated in the country, all those will be a component of the idea of economy. जैसे कि poverty हो गया, वो economy के अंदर आएंगे, ठीक है, unemployment है, ठीक है, per capita income है. All these are something which are practically visible or practically available, that are known as economy as such. Okay, so if you understand, first of all, the definitions of economics, the very and the most important definition is given by Adam Smith. Adam Smith have given a wealth definition of economics. Which definition he have propounded, ma? Wealth definition he have propounded. Clear? He have written a book known as Wealth of Nations. What is the name of the book written by Adam Smith? Wealth of Nation. So which definition is given by Adam Smith? Wealth definition. In which year, amma? 1776. In the year 1776, it was Adam Smith who propounded for the very first time the idea of economics. Okay, next we will have an economist known as Alfred Marshall. We'll have an economist known as Alfred Marshall. Alfred Marshall have given the welfare definition of economics. He says economics is nothing but welfare of all whoever are residing in a particular country, be it women, be it men, be it handicapped, be it children, be it SC, ST, BC, minority. If we speak about the context of India, all this welfare of everyone, that is called welfare definition, propounded by whom? Alfred Marshall. He given this theory in the year 1890. In the year 1890. Okay, so wealth definition. Economics is nothing but creating and also the generating of the wealth. It was propounded by whom? Adam Smith. Economics is nothing but welfare of all. It is propounded by whom? Alfred Marshall. Next economist is called Lionel Robbins. Lionel Robbins have given the scarcity definition of economics. Lionel Robbins have given the scarcity definition of economics. This was propounded in the year 1932. This was propounded in which year, ma? 1932. Just now I said, there is a scarcity in the country. There is a scarcity in a society. Scarcity in a area. अभी जो chocolate और बच्चों का example लेकर के बताया, that was altogether the Lionel Robbins definition. Okay, so after Lionel Robbins, then we will be having a definition of P.A. Samuelson. P.A. Samuelson. Okay, he have given the growth definition of economics. So he says that economics is nothing but growth of the country. We will have to strive for economic growth all the time. अभी हम economic growth and development में जाएंगे, तब हम ठीक से समझेंगे उसको. ठीक है, growth. Propounded in the year 1948. Okay. Next, the latest definition is given by A.C. Das. The latest definition is given by A.C. Das. That is what we call it as the modern definition of economics. Modern definition of economics. This was propounded in the year 2011. In which year it was given, ma? 2011. Which definition A.C. Das have given? Modern definition. Meaning, according to A.C. Das, economics is a choice making. Choice making, be it by individuals, be it by institutions, be it by organizations, be it by private entities, so on and
so forth. According to A.C. Das, he have given which definition, ma'am? Modern definition is propounded. So one or the other question will definitely be asked in your examination, maybe in the match the following, maybe in any other choose the correct answer likewise. So they will be asking. Again a quick revision. Adam Smith given the wealth definition. Alfred Marshall given the welfare definition. Lionel Robbins given the scarcity definition. P.S. Samuelson growth definition. A.C. Das given the modern definition of economics. Next term. Economics can basically be divided into two different components. One is what we call it as the microeconomics, and the other is what we call it as the macroeconomics. So if somebody asks you what is the difference between micro and macroeconomics, okay. Micro is study at individual or household level. Micro is the study at individual level or else the household level. Well, macro, whenever we speak, it is the study at state or national level. Macroeconomics meaning it is the study at the state level or else at the national level. Okay, just understand one thing, just a second. So microeconomics is the study at individual level. Okay, so what are the components of microeconomics? Like say production possibility. What can be the expected production in micro context? We'll be discussing that. Okay. Then we will be understanding something about the opportunity cost concepts. Opportunity cost meaning to chase one thing, what we are losing. If I want to have a pen, I should lose a board. So this is the opportunity cost. Opportunity cost is the board here. Okay. We will be understanding the income at the low level, that is what we call it as the wages. Okay. Then we will be speaking about the expenditure at the lowest level. So micro, as the name itself suggests, it is of the small scale. Macro, the name suggests it is at the large scale. Okay. So expenditure at the low level. Okay. So that is what we call it as the consumer behavior. Consumer behavior. So if there is any increase, for example, tomatoes price is increasing in the country right now. So what is the consumer reaction or else the consumer behavior? So that is all we discuss in the micro level. But when we speak about the macro level, it is the study of the economics at the large scale we call. Large scale here meaning we will be understanding India as a whole. Like GDP will be of India. We cannot have a GDP of a household. Okay, like we will be understanding the a few other things like budgeting. Okay, budgeting will be there in the household micro level also, but we are speaking about budget at the macro level because we will be discussing about the idea of budgeting at a large scale like 1 lakh crore, 2 lakh crore, all these are the large scale budgeting altogether. Clear all of you? Budget, remember, budgeting will be at the macro level, budget line will be in the micro level. Budget line shall be there in the micro level. Like example, indifference curves. Okay, when we go to the micro concept, we will understand that in very detail. So don't worry. So just remember here, micro and macro, the major difference is micro is at the small level, macro is at the large level. Okay, next. We shall be going to what kind of an economy did India adopt? Okay. So, if you understand broadly,
Post Second World War period, post Second World War, that is after the Second World War, the entire world was divided into two different segments. Okay, one is what we call it as the bloc that is dominated by Russia, and the other is a bloc that is dominated by United States of America. So after the Second World War, that is at the period of India's independence, we had an option either to go for Russia's socialistic model or to adopt USA's capitalistic model. Okay, either we should go for the Russia's socialistic model or else we should go for the USA's capitalistic model. So that was altogether two different agendas which we had during the time of our independence. Okay, so when we have this option, Pandit Jawaharlal Nehru was more inclined to go for the socialistic approach. The reason being, in the socialistic economies, we will be having a concept of planning. We'll be having a concept of planning. And in fact, to be very clear with you, the idea of planning in India, 5-year plan and everything, was inspired from the country called Russia, was taken from the country known as Russia. Okay, so Pandit Jawaharlal Nehru was more oriented towards the socialistic pattern. Socialistic meaning is what, ma? Socialistic is something where the government will be more dominated. The government will be more dominated. That is, the role of resources management will be in the hands of the government. The role of resources management, okay, meaning whatever are the resources in the country, those resources shall be controlled by the government at large. That is what we call it as the socialistic countries or the socialistic economies. Well, capitalistic is something, a country's economy which is being more of private dominated. The country's economy which is more of the private dominated is known as the capitalistic economy altogether. Clear all of you? So Jawaharlal Nehru, though he said we will be adopting a socialistic pattern of economy, but he have openly admired that, committed that, yes, we will be going for socialistic approach, but provided we will be also giving due importance to the public and private entities. We will be giving due importance to the both of public as well as the private entities. That is where we call Indian socialism as Nehruvian socialism. What do we say, ma? Indian socialism, we do call it as the Nehruvian socialism. That is a mixture of public and private sector. That is the reason Indian economy is known as the mixed economy. Indian economy is known as the mixed economy. Is this clear? I hope. Okay. Another important thing, just understand. Recently, you might be studying in the newspapers such as the news or else the updates related to India is becoming more privatized. India is becoming capitalistic economy. That is where when we promote disinvestment, when we promote the disinvestment. So what exactly is the idea of disinvestment? Just understand. If suppose we had a entity known as PSU, that is the public sector unit or the public sector undertaking. So PSU is a company in which 51% or more than that share, 51% or above that share, if it is with the government, then that particular entity or organization will be called as the PSU. Okay, now if they are having 80% share, okay, government is having 80% share and another 20% suppose it is of the
private entities. What the government is doing is they are taking back another 20%. They are motivating the private sector to come and invest in the PSUs. So they are remaining with 60% ownership. Owner is still the government only. So that is what, 60% with the government, 40% with the private. This is called partial disinvestment. This is called what, ma? Partial disinvestment. If suppose the government will sell entire 80% stake, if the government sell entire 80% stake, so the government will become 0% of the government, 100% of the private entities. Okay, this is completely known as 100% disinvestment. What do we call that? 100% disinvestment. 100% disinvestment will actually be known as privatization. Actually be known as privatization. Like you might have heard in the recent times, like Air India. Air India have been completely sold. LIC is not sold. LIC is just partially disinvested. Okay, so that point. So when the current Modi government is trying to do the complete disinvestment, 100% disinvestment, then India is actually stepping towards the mode of privatization as such. I hope this particular point is also clear to every one of you. So what is the pattern of Indian economy? Mixed economy. So the capitalistic economy is also known as, once it was asked in your CPF examination, capitalistic economy is also known as market economy. It is also known as what, ma? Market economy. Capitalistic economy is also known as what? Market economy. So we have understood in detail what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Clear? So I'll give you one question parallelly so that you can solve that. Suppose, consider the following statements. I've given the question like this. Consider the following statements. The first statement says, price theory is a term associated with macroeconomics. Price theory is a term associated with the macroeconomics. Second statement says, income and employment theory is a term associated with the microeconomics. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both 1 and 2. Option D, none of the above. Okay, so you can just pause, think for a few seconds and you can answer. Understand? When I say microeconomics and macroeconomics, okay, so price theory is a term associated with the macroeconomics. Price, I said consumer behavior is a micro concept, not a macro concept altogether. So price theory is a theory that is associated with the microeconomics. Term associated with the microeconomics. Okay, now income and employment. Like income we consider here what, ma? National income. Employment at large. Employment, unemployment. Employment meaning what is the unemployment? Unemployment we will discuss at the larger scale. Yes or no? National income, employment theory, everything. Okay, so it is a term associated with the microeconomics. No, it is wrong, ma. It is associated with the macroeconomics.
associated with what? Macroeconomics. So both the statements are actually interchanged. Price theory related to micro, income and employment theory is related to macro. So since there is an interchange of those terminologies, both the statements are getting wrong, and that is the reason none of the above will be the correct response for the question. Clear? I hope that this is coming so clear. Next, directly we'll enter into the core concept of national income, from where you are getting questions again and again. Okay. Like we have a discussion, we should do a discussion known as national income. What is national income? If somebody asks you normally what exactly is the idea of national income, okay, you can openly say that national income is nothing but it is the income of the country. Okay, so it is nothing but the income of the country. For example, you clear a UPSC examination, so you will be getting certain income. If your father is working somewhere, your father will be generating some income. Okay, if your brothers, elders, somebody is working, they will be generating some income. But your father, your brother, yourself, your sister, everyone, your relatives, your friends, all of them are a part of India. Okay, so they are participating either in production of the goods and services, or else in generating income to the country. Okay, so income of the country. So to understand national income, we'll have to understand few important aggregates. Okay, so the aggregates which we will study now is the aggregates of GDP, then we have NDP, then we have GNP, after that lastly we have NNP. We'll spend few time in understanding the core concepts or the core ideas that are related to the national income. Okay, GDP. GDP is nothing but gross domestic product. GDP is nothing but gross domestic product. Okay, understand? Gross means here total. Gross here is meaning is what, ma? Total. Domestic here meaning is India. Domestic meaning is India. So GDP we can call it like the total production. I'll erase this for you. GDP we can call like total production within India within a period of one financial year. So I am using the terms, very important terms I am using here, just understand. Total production within India within a period of one financial year I am saying. Okay, so total production, it includes both goods and services. It does include both goods and services. That is, the total production of goods and services, that is what we call it as the final goods. Do remember, ma, we will be taking into consideration while estimating the national income only the final value of goods and services. For example, steel is becoming car. Okay, cotton is becoming a shirt. Okay, cotton is becoming a shirt. Wheat is becoming a roti. Wheat is becoming a roti, suppose. So we will be taking into consideration only the value of final goods and services. We will not be taking any value of intermediate goods, because if we calculate steel separately and car separately, then it results into the double counting. It does result into what, ma? Double counting. That is the reason we will be taking into consideration what? Final value of goods and services shall be taken into consideration. Okay. So here I am using the term goods and services, that is a final value. Final value will be taken into consideration. Okay. So we will be estimating the GDP. GDP will be resulted into two important aspects. We will be releasing the GDP on quarterly basis also.
We'll be releasing the GDP on annual basis also. We'll release the GDP on two important components. One is the quarterly GDP also, and the other is annual GDP also. Okay, so quarterly we'll release into 4 quarters. Financial year is the term I'm using here. Financial year का मतलब होता है April 1st से March 31st तक, ठीक है? Financial year का क्या मतलब है जी? April 1st to March 31st. So we will be releasing the GDP on April, May, June, that is what we call it as a quarter 1. July, August, September, that is what we call it as a quarter 2. October, November, December, that is what we call it as a quarter 3. January, February, March, that is what we call it as a quarter 4. So we can go for a comparison of the GDP, okay, from quarter 1 of 2023 to quarter 1 of 2024, quarter 2 of 2022 to quarter 2 of 2023. So likewise we can go for the comparison as well. एनुअल बेसिस मतलब हर साल का भी जीडीपी हम रिलीज करेंगे, ठीक है? सो इसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे अभी. What I said, GDP is nothing but it is the total production within India within one financial year. Okay, so here India means the entire vicinity of India. ठीक है, पूरा भारत में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, that is what we call it as the India here. Okay, so India does extend till the northernmost point. Northernmost point of India कौन सा है? Northernmost point of India is called Indira Koal. The southernmost point of India is called Kanyakumari. कौन सा है जी? Kanyakumari. The easternmost point, what is the easternmost point of India? Any idea? Clear. Easternmost point of India, like we have Kibittu. Westernmost, like we have Buharmota. And if you speak about the idea of Andaman and Nicobar, that is the water masses also, the southernmost point here will be Indira Point. The northernmost point is what, ma? Indira Koal. Southernmost point is called Indira Point. If we calculate the water masses also, otherwise, ठीक है? मतलब इस पूरा vicinity में, in the entire vicinity, whatever the goods and services are being produced, ठीक है? That will be calculated as a part of our GDP. Also, if there are any acquired territories of India across the globe, ठीक है, पूरा दुनिया में जहाँ पर भी इंडिया का प्रॉपर्टीज होगा, एम्बसीज होगा, ठीक है, कुछ और acquired territories होगा, कुछ naval ships होंगे, ठीक है, they are traveling towards foreign countries, कुछ aircraft carriers होंगे that are traveling to the other countries. All those also will be a component associated with the vicinity of India. I hope you got my point very, very clear. Now, we will be understanding, for example, in India, ठीक है, इंडिया में हम ये मान लेते हैं कि पूरा प्रोडक्शन, the entire production in our country, let us suppose the entire production within our country is happening only with the idea of wheat, ठीक है? Let us suppose that the entire production of India happens with the purpose of wheat. Now, within 1 year, let us suppose some 500 kgs of wheat is produced in entire India. Okay. Now, each kg is being sold at rupees 10 per kilogram. Each kg is being sold at rupees 10 per kilogram. Then what will be the GDP output of the country? GDP output of the country will be 500 into 10, that is what we call it as the 5,000. 5,000 rupees is the GDP of the country. Now, how did I get? I have got this because of price into quantity. Price into quantity. But understand one thing. If I am taking off the price of current year into quantity of current year, I am taking the idea of, suppose this is 2023, price of current year and price of quantity of current year. Price of current year into quantity of current year is what we call it as the nominal GDP. What do we call nominal GDP? And also the price of current year into quantity of base year.
price of current year into the quantity of base year. What is base year? A base year is a normal year. Base year is nothing but, it is regarded to be a normal year. That is the year with no fluctuation, zero fluctuation, no changes, no ups and downs. A normal year will be known as a base year. Okay, so if I take price of current, quantity of current year into the price of base year, quantity of current year into the price of base year, then that particular idea is what we call it as the real GDP. What do we call that, ma? Real GDP. So nominal GDP and real GDP concepts, I hope, are coming very, very clear to all of you. Okay. Next, we will be having a term known as GDP at market price and also GDP at factor cost. Okay. Market price is something what we say, for example, I said entire GDP is based on the production of wheat. Okay, so wheat produce करने के लिए we want land, we want labor, we want capital also, we want entrepreneur also. तो इन चारों के मिला के we call it as the factors of production. What do we call, ma? Factors of production. Like for land we pay what? Rent. Land को क्या देंगे हम? Rent. Labor will be giving what, ma? Wages. Wages को labor को क्या देंगे? Wages. Capital will be receiving interest. Capital को क्या मिलेगा? Interest. Entrepreneur will be receiving what? Profit. Entrepreneur will receive what? Profit. So the production of wheat only till the फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू हम जब ऐड करेंगे दैट इज नोन एज द फैक्टर कॉस्ट. सो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस subsidies. GDP at factor cost is equal to GDP at market prices minus indirect taxes plus subsidies. Okay, understand. What we are doing, factor cost. Indirect taxes we are subtracting. Indirect taxes we are subtracting because indirect taxes such as GST, right now there is no concept of indirect taxes in our country. We have only one important indirect taxes existing in the country. All taxes are being submerged into one nation one tax. किसमें हमने इकट्ठा किया था, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी. तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर तो जीएसटी आएगा नहीं ना. फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज को हम इसमें जोड़ रहे हैं फैक्टर कॉस्ट में. क्यों जोड़ रहे हैं? व्हाई वी आर एडिंग सब्सिडीज? फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज नॉट एट ऑल एबल टू प्रोड्यूस व्हीट. India is unable to produce wheat. Then in that scenario, in that case, what happens? The government will promote the wheat producers or the wheat farmers. They will give certain subsidies, like free fertilizers will be given, free electricity can be given, free water supply can be given. So minimum support price can be ensured. All these are regarded as the subsidies. ठीक है, उन सबको क्या बोलेंगे जी हम? Subsidies. तो GDP at market price minus indirect tax plus subsidy will be giving me what, ma'am? GDP at factor cost. फिर GDP market price निकालना बहुत आसान है. कैसे आसान है? देखो, GDP at market price is equal to GDP at factor cost. Indirect taxes minus किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Plus indirect taxes minus subsidies. So market price is the price which is paid by a consumer lastly. ठीक है, that is a price which is paid by the consumer. When a consumer pays, फैक्टर कॉस्ट का पूरा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. फॉर एग्जांपल एक बिस्किट पैकेट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम मेकिंग कर रहे हैं. तो बिस्किट पैकेट को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए. तो उन सब का
कॉस्ट क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, दो द कंपनी विल पे, लेकिन बर्डन किसको लेना है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को लेना है बर्डन, ठीक है, द प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज को माइनस करेंगे क्योंकि सब्सिडीज इज नथिंग बट इट इज अ डिस्काउंट, नो, सब्सिडी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज एलिमिनेटिंग अ बर्डन ऑन अ कंज्यूमर। सो एलपीजी सब्सिडी देता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर वी विल बी गिविंग द एलपीजी सब्सिडी। एलपीजी सब्सिडी किसी को भी हम दे रहे हैं, मतलब तो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर में हम 200 रुपए का सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब हमें 800 भरना है या फिर 1200 भरना है। डेफिनेटली वी शुड पे 800 rupees, not 1200 rupees, because the subsidies are to be subtracted. The taxes are to be added. Is this clear to all of you? Taxes simply याद रखो, GDP at market price में taxes हम जोड़ेंगे, subsidies subtract करेंगे, GDP at factor cost में taxes हम minus करेंगे, subsidies हम add करेंगे। I hope this particular point is coming very very clear to all of you. Now, तो जीडीपी को समझने के बाद देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट जीडीपी माइनस depreciation. NDP meaning is what? GDP minus depreciation. Depreciation is nothing but wear and tear. Depreciation का मतलब होता है wear and tear. The loss of a particular good. For example, you buy a car worth rupees 10 lakh in the year 2011. ठीक है, और वही गाड़ी को आप 2022 में बेच रहे हैं, ठीक है, और 23 में बेच रहे हैं, क्या ये 10 लाख रुपए सेम वैसे ही रहेगा? एब्सोल्युटली नो, इसमें फॉल डाउन टू 5 लाख रुपीज ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इज नथिंग बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीडीपी प्लस NFIA. GNP meaning is what? GDP plus NFIA. NFIA meaning net factor income from abroad. What is NFIA ma? Net factor income from abroad. So whatever the income that is coming from abroad, foreign countries to India, that particular income is what we call it as remittances. What do we call that remittances? Clear all of you? So GNP is nothing but gross national product. GDP plus NFIA, net factor income from abroad. Okay, then we will be having the final concept called NNP. क्या है NNP? NNP का मतलब होता है net national product. NNP meaning is what net national product. इसको हम क्या कहेंगे? GNP minus depreciation. What do we call? NNP is nothing but GNP minus depreciation. So can I also write GNP is equal to GDP plus NFIA minus depreciation? I can write it like this also, no? So NNP. So NNP we will derive it at factor cost. NNP, if suppose I derive it at the factor cost, क्या आएगा? GDP at market price, GDP at market price, clear, minus depreciation, depreciation plus net factor income from abroad.
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर कॉस्ट में माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे सब्सिडीज को, प्लस सब्सिडीज. So that is what we call it as the NNP at factor cost. क्या किया मैंने देखो, NNP at factor cost में सब कुछ इंक्लूडेड है. GDP माइनस डिप्रिसिएशन गिवन में NDP आ गया इधर, ठीक है. GDP प्लस NFIA क्या आ गया, GNP आ गया, ठीक है. GNP माइनस डिप्रिसिएशन क्या आ गया, NNP आ गया. GNP minus depreciation given me what ma, NNP. So since all the factors of national income are covered in this particular definition, that is the reason NNP at factor cost, NNP at factor cost को ही हम national income कहेंगे. I hope that this particular point is coming very clear. Again and again it has been asked in UPSC examinations what exactly is the definition of national income, which best suits national income. सवाल कुछ ऐसा आएंगे, देखो एक सवाल देखते फिर. Which among the following best suits national income? Option A, GDP at market price. Option B, NDP at factor cost. Option C, NNP at factor cost. Option D, GNP at factor cost. So if somebody asks you this, which among the following best suits the national income concept, then the correct answer for the question would be NNP at factor cost. Okay, now accounting of national income. Next topic we will discuss, accounting of national income. National income accounting. So there is nothing but GDP accounting. We'll discuss GDP accounting. Both are same. Okay. We'll discuss three basic methods. GDP can be accounted, or else GDP can be calculated by using basically three methods. What are the three methods? First is what we call it as the income method. Income method. Next one is what we call it as the production method. After that we will have something very important known as the expenditure method. Expenditure method. See, first of all क्या है, we have income method, then we have production method, after that we are having expenditure method. Okay, just a second. Right. So under income method we'll be taking into consideration different factors of production, that is, you know very well now, land, labor, capital, entrepreneur. Land, labor, capital and entrepreneur. For the land we'll give wages, for land will pay rent, labor will give wages, capital will pay interest, entrepreneur will give profit. So the income method formula will be R plus W plus I plus P. R plus W plus I plus P, meaning rent plus wages plus interest plus profits. Apart from this, is there any other method of income? Absolutely not. Clear all of you? Like in income method we will be using two different terms. The terms which we are going to use here is called COA, OS and MI. COE is nothing but
compensation to the employees. COE is nothing but what, ma? Compensation to the employees. OS is nothing but operating surplus. OS is nothing but operating surplus. MI meaning mixed income. MI meaning is what? Mixed income. Okay. So compensation to the employees, this will be in the form of wages. In the form of wages. Operating surplus meaning whatever the asset you have, that asset is actually creating certain revenue to you. So that is what we call it as the operating surplus, like profits, like rent. All those are the components of the operating surplus. For example, you clear UPSC, you will be giving a salary, you will be given a salary. Okay. Suppose you have agricultural land and that land is being given on lease, the land is on your name. Okay, so you will be getting what, ma? Rent. So this salary is called what? Whatever UPSC gives you, I mean whatever your state gives you, that particular salary is called COE. The rent whatever you get is called OS. So now you will fall into which category? MI category. MI category. MI meaning is what? Mixed income, meaning COE plus operating surplus. MI is equal to what? COE plus operating surplus. Operating surplus is nothing but the revenue that is generated not by your hard work but by your assets, but by your properties. Okay. Next we will have a production method. Under production method is also known as what, ma? Value added method. प्रोडक्शन मेथड का दूसरा नाम क्या है जी? वैल्यू एडेड मेथड. ओके, नाउ अंडर द प्रोडक्शन मेथड we will be understanding a simple thing: how much is produced in an economy, how much is produced in an economy. That is what we call it as the production method. Okay, like we will be taking a formula like P1 Q1, like a good, for example, first good have price 1 quantity 1 plus P2 Q2 plus P3 Q3 so on up to Pn Qn, so on up to where we'll take Pn Qn. So here P indicates what, ma? P indicates price, Q indicates quantity. P indicate the price and Q indicate the quantity. So production, total production and the total value of production. Next, the most important method again and again asked in your examination is called the expenditure method. It's called the expenditure method. For expenditure method, we'll have a formula, ma. For deriving expenditure method, we'll have a formula. The formula is y is equal to c plus I plus g plus x minus m. What is the formula? Y is equal to c plus I plus g plus x minus m. C here means consumption, I means investment, G means government, x minus m means export minus import. That is what we call it as the net trade. What do we call that, ma? Net trade. Y is equal to क्या बताया? C plus I plus G plus x minus m. C here indicates consumption. Consumption expenditure. Consumption expenditure. Who will do the consumption expenditure? Households. We do consume, no? Households. Who will do the investment expenditure? Investment expenditure कौन करेंगे? The entities or firms. Entities, companies करेंगे ये सब. Entities or firms. Government expenditure किस तरह का expenditure होगा वो? Like salaries, pensions, subsidies, schemes, welfare, development. All these are the government expenditure. Export minus import will give me what? Net trade export. So any country should have exports at maximum, imports at minimum. Then that economy is called a good economy.
उस तरह का इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? गुड इकोनॉमी ऑल टुगेदर. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अगेन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. Who among the following currently estimate national income? Who among the following currently calculate national income? Okay, option A, NSSO, National Sample Survey Organization. Option B, NSO, National Statistical Office. Option C, CSO, Central Statistical Office. Option D, Niti Aayog. Okay. So what can be the answer for this? A, B, C, D. What will be the answer? Just pause the video and you can answer. ठीक है? Currently यदि आपसे कोई पूछेंगे, that is NSO. Who will be calculating national income in India? NSO. Who was the first person to calculate national income in India? First person to calculate national income in India, Dadabhai Naroji. That was altogether his assumption of calculating the national income. But calculating national income on scientific lines, ठीक है, ऑन साइंटिफिक लाइन्स, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक लाइन्स में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था कौन? V.K.R.V. Rao. V.K.R.V. Rao. Who is the first person to give the idea of GDP? GDP का आइडिया देने वाला फर्स्ट पर्सन to give the idea of GDP is Simon Kuznets. Who was the first person to give the idea of GDP? Simon Kuznets. Simon Kuznets have given a Kuznets curve also. What does Simon Kuznets curve speak about, ma? Simon Kuznets curve, it speaks about the relationship between per capita income and inequality. What does Simon Kuznets curve speak about? It speaks about the relationship between per capita income and inequality. For example, he says, this curve is very, very important, asked in your UPSC examination. It is an inverted U hypothesis curve. It's an inverted U hypothesis curve. Okay. So here on one axis, I'm taking inequality. It ranges from 10%, 20%, 30, 40, 50, likewise. On the other hand, I'm taking per capita income. That is US dollar, $100, $200, $300, $400, so on and so forth. Okay. So Simon Kuznets, the person who have given the idea of GDP, have also given the Kuznets curve. It will go like this. It's an inverted U hypothesis. What Simon Kuznets say? As a per capita income increases, ठीक है, जैसा per capita income बढ़ेंगे, ठीक है, initially क्या होगा? Inequality will also increase. Initially, inequality will increase and reach at the maximum point. ठीक है, एक maximum point तक पहुंच जाएंगे. And when income is increasing, inequality is increasing, that is a phenomena what we see in the developing economies. Phenomena what we witness in the developing economies. And gradually क्या होता है? Inequality start declining. Inequality start declining. Though income is increasing, with increase in the income, inequality starts falling down. Inequality start falling down. That kind of activity is witnessed in the developed economies. It's an inverted U hypothesis. So if somebody asks you who have given the idea of GDP, Simon Kuznets. Simon Kuznets have also given
inverted U hypothesis, that is a relationship between per capita income and inequality in the country. Now, who have given the idea of GNP? GNP का idea कौन दिया था? The idea of GNP was for the first time used at Bretton Woods Conference. The idea of GNP was for the first time used in Bretton Woods Conference. Bretton Woods Conference is a conference conducted for economic stability post Second World War period. After Second World War, for the economic assistance or the economic stability of the world, we have conducted a conference, that is what we call it as the Bretton Woods Conference. What do we call Bretton Woods Conference? So Bretton Woods Conference have used the term for the first time known as GNP, that is called Gross National Product. Anyways, so I hope these ideas are coming very very clear to all of you. इसके बाद हम सीधा चलेंगे in the important dimension called inflation. We'll discuss the next core concept here called inflation. So now let us understand the idea of inflation. Inflation का क्या मतलब होता है? Inflation, to understand inflation, we'll have to take up two important theories. One is the theory of demand and the other is the theory of supply. Okay. So demand, when demand is high, supply is low, the price will gradually go high. ठीक है? Demand is high, supply is low, then the price is going high. That increase in the price is known as inflation. ठीक है? ध्यान से देखना. Increase in the price of goods and services with increase in demand and decrease in supply. With increase in demand and the decrease in supply. So, if you understand the things very clearly and carefully, we can also call it as like the sudden increase in the price of goods and services. It's not a gradual increase. So from 2014 to 2023, the petrol have become 90 rupees or 80 rupees to 120 rupees. So they have not increased 30 rupees all of a sudden. They've increased 2 rupees once, 3 rupees once, 1 rupee once, 50 paise once. So likewise, gradually they have taken it to 120 or 118 or 117. It depends on state to state. But for example, you take the tomato right now, tomato. Okay. So tomatoes are trending in the economy right now. So tomatoes price are been suddenly increased. Okay. So suddenly increased. So that sudden increase in price of goods and services is called inflation. I hope this point is coming very clear. Now, what I said, there is a phenomena, increase in demand and decrease in supply. Okay. So if you understand the demand, okay. So for example, let us take apples. Apples. The relation between price and quantity. Price and quantity. Okay. If the price of apple is rupees 5, the price of apple is rupees 5, then we may demand somewhere around 20 apples. Somewhere around 20 apples. If the price is increased to rupees 10, we may demand, with the increase in the price, the quantity demanded decreases. We may demand only 10 apples. If the price increases to 20 per apple, then we may demand only 5 apples. So what it is happening here, with increase in the price, the demand is actually diminishing. The demand is actually declining. Okay. So if we take the demand curve like this, okay, for example, I am taking the demand curve
like I'm saying price and I'm taking the quantity. Okay, quantity I'm taking like 5, 10, 20, 30, 40. Price I'm taking like 5, 10, 15, 20, 25, so on. Okay. So when the price is at the lowest, there is 5 rupees. So we've demanded the maximum apples, maybe 20, like that. When the price is increased to 10, we have demanded less number of apples. Price is increased to 15, we have demanded even less. Price increased to 20, we have demanded even less. So that is how the demand curve moves on. Clear all of you? So the demand curve is downward sloping. What I said, demand curve is actually downward sloping. Similarly, we say tomato price is increased. It is impacting a lot to the consumers. But suppose we are all tomato farmers, then it is a positive impact. Okay. So if we speak about the supply, price and quantity supplied. Okay. Suppose the rupees 5, we may supply only 5 apples. Increase 10 apples. 20, we may supply 20 apples. 30, we may supply 30 apples. As the price increases, the supply will also increase because it is a motivation to the producer. किसका motivation है जी वो? Producer का. ठीक है? Again the same thing we are taking here. So quantity and price. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Similarly, 5, 10, 15, 20, 25 and so on. Okay. When the price was 5, we have supplied only 5 apples. When the price increased to 10, we have supplied 10 apples. Price increased to 15, we have supplied 15 apples. 20, we have supplied 20 apples. 25, we have supplied 25 apples. So this is how the supply curve goes on. That's how the supply curve goes on. So the supply curve will be is upward sloping. Supply curve is actually upward sloping. Demand curve is actually downward sloping. Okay. So in an economy what happens is, if I take it up like this, supply curve. If I take it up like this, demand curve. Okay. Now the point where supply and demand meet with each other is called market equilibrium. What do we call that? Market equilibrium. Okay, understand one another thing. With increase in the price, we are increasing the supply. Clear? We are increasing the supply. So 5 is becoming 10. 5 quantity supplied, 5 apples we have supplied. Now we are supplying 10 apples. Understand very carefully. So what percentage has been increased? What percentage increase in supply is there? 5 is becoming 10, that's all fine. 5 becoming 10, what is increase in percentage is there? Any idea? What is the increase percentage here? 5 is becoming 10. Some student can say, somebody are sitting here. If 5 is becoming 10, what percentage has been increased? 100%. 100%. 10 is becoming 20, what percentage increase is there? 100%. The 20 becoming 30, what percentage increase is there? 100%. Okay. So this percentage change of supply, is what we call it as the price elasticity of supply. What do we call that? Price elasticity of supply. Similarly, here 5 is becoming 10, 20 is becoming reducing to 10. What percentage it is diminishing? Again 100%. This percentage change of demand is called
price elasticity of demand. What do we call that, ma? Price elasticity of demand. Elasticity is a term that is related to the percentage changes. Okay. For example, if the same curve, I am taking a column, different column called income. Income of a person is 100 rupees. So he would have demanded 20 apples. Income increased to 300. Income of a person increased to rupees 300. Then you should tell me this quantity demanded will increase or decrease. It is not price and quantity relation. I am taking here income and quantity relation. Income is increased. Then the quantity demanded will also increase actually. Clear all of you? So what percentage of change happened with income change? That is called income elasticity of demand. What do we call that, ma? Income elasticity of demand. So income elasticity, price elasticity, and price elasticity of demand and price elasticity of supply. So they are all the percentage changes. And the point where demand and supply meet with each other is actually known as what? Market equilibrium. What do we call that, ma? Market equilibrium. So if the demand is shifted to rightward, more demand, leftward, less demand. Clear? That is, supply may be shifted to rightward or leftward. So this market equilibrium points will actually differ from time to time, because you'll see tomatoes price are increasing, but since there is no alternative good for tomatoes, people are being mandated to buy tomatoes. Okay, so I hope the core idea of inflation is coming so clear to every one of you. Okay, now we are having different types of inflation, like cost push inflation, demand pull inflation. Cost push inflation is where the inflation is increasing because of the increase in the cost of production. Inflation is happening because of the increase in the cost of production. Demand pull inflation is because too much money is chasing too few goods. Too much money in the economy is actually chasing too few goods. That is what we call it as the demand pull inflation. Okay, like money supply is already high, money supply is already huge. Okay, then we will have creeping inflation. It is on the base of size, very small rate of inflation. Okay, creeping inflation, 2 to 3% rate of inflation. Then we will have walking inflation, slightly higher, 3 to 6% like that. Then we'll have running inflation, like 6 to 9% like that. Then we'll have galloping inflation, galloping, somewhere around 2 digits, like 10%, 12%, 15%, 99%, like that. Whatever is the 2-digit rate of inflation is called galloping inflation. Then we'll have hyperinflation, hyper, very serious rate of inflation, very serious, which can be called as uncontrollable rates of inflation, uncontrollable rates of inflation, like 5,000% of inflation, 50,000% of inflation, which we recently witnessed in a country called Venezuela. In which country we have seen that rate of inflation, ma? We have seen that in the region of Venezuela. Clear? Then we'll have a term called skewflation. If the inflation is actually restricted to one item or few items, only one item or few items, that is called skewflation. Then we will have a term called disinflation. Disinflation. Disinflation is actually where there is a percentage decline in the rate of inflation, percentage change or percentage decrease in rate of inflation, such as 6% inflation is becoming 3%. That is called disinflation.
Okay, then we will be having deflation. We will have what ma? Deflation. Deflation is the opposite of inflation. Deflation is the opposite of inflation. Such as supply is high, demand is less, price will naturally fall down. Price will actually fall down. That is what we call it as the deflation. So tomatoes, you are experiencing it at the high price currently. So over a period of time you will experience, like sometimes tomatoes you are getting at 1 rupee per kg, 2 rupees per kg. That is all what we call it as the deflationary scenario or the deflationary situation. Clear? Like we have core inflation. Core inflation, such as if the inflation is restricted to the core items like steel, cement, iron, so on. That is what we actually call it as the core type of inflation, or else we call it as the core inflation. Okay, so there are all different types of inflations which we need to understand. Understanding, they are asked again and again in your examination also. Okay. Now we will be taking up the control of inflation. So before understanding control of inflation, is inflation good or bad? Is inflation good or bad? Okay. So if you come to the point, inflation. Inflation is actually recommended at certain point to be actually placed in the country. So internationally, the recommendation of inflation would be given by IMF, a body called IMF, International Monetary Fund. कौन देगा internationally? Recommendation of rate of inflation that shall be given by IMF, that is International Monetary Fund. ठीक है? क्या कहेंगे IMF? For developed countries 2.3%, for developing economies 4.6%. ठीक है? इंडिया में कौन देंगे? In India, inflation targeting would be given by a body called RBI. कौन देगा? RBI, Reserve Bank of India. ठीक है? In the year 2013, we have appointed a committee known as the Urjit Patel Committee. What is the name of that committee? Urjit Patel Committee. Urjit Patel Committee ने ये बोला था कि inflation rate इंडिया में 4 ± 2% हो सकता है. यानी inflation can be maximum 6%, inflation can be 2% at the lowest. Okay, but though our actual figures are much higher than these. Okay. So if inflation occurs in the economy, यदि inflation होगा, then it is a kind of a motivation to whom? It is a motivation to the supplier. It is a motivation to the producer. So if inflation is there, then investment will increase, supply will increase, then infrastructure will increase, employment opportunities will increase, salary will increase, savings will increase, and the savings are again done reinvested. Savings को वापस हम क्या करेंगे? Reinvest करेंगे. So if inflation is there, the proper cycle of economy will continue to exist. Will continue to exist. Clear? Now, मैंने ये भी बोला था, if inflation is there, then employment opportunities will increase, meaning unemployment will decrease. Unemployment will decrease. So can I say inflation is inversely proportional to unemployment? Inflation is inversely proportional to unemployment. So this is what is called Phillips equation. This is what is known as actually what ma? Phillips equation. So Phillips equation says inflation and unemployment are inversely related to each other. Okay. So yes, to some extent inflation should be there in the economy. Okay. So to control inflation, we have two policies intact. Okay. One is what we call it as monetary policy or the monetary policy tools.
and the other is what we call it as the fiscal policy. In your upcoming examination, most of the questions will be there from these two policies only. Okay, most tactical questions, most technical questions can actually be enacted or framed from these two topics. So we'll understand this in detail as well. Okay, now understand. Monetary policy is the policy that is prepared by Reserve Bank of India. Who will prepare the monetary policy? RBI, that is the Reserve Bank of India. While the fiscal policy is something which is prepared by the central government. Who does prepare the fiscal policy, ma? Central government. Okay. So RBI shall prepare the monetary policy through its monetary policy committee. Who will prepare this? Monetary policy committee. So slightly we will go to RBI, we will understand the things that are associated with RBI. Later on we will go to the central government in detail. See. RBI. When was RBI established? Established according to the Act of 1934 on April 1st, 1935. Act was enacted in the year 1934 and it came into force on April 1st, 1935. Okay, who recommended to set up RBI in India? The recommendation was given by Hilton Young Commission. The recommendation was tendered by whom? Hilton Young Commission. So to set up RBI, who have recommended? Hilton Young Commission have recommended. So RBI will be basically having two different structures. One is called scheduled banks and the other is what we call it as the non-scheduled banks. Scheduled banks and non-scheduled banks. Scheduled banks are those banks which are registered under section 2 of RBI Act of 1934. Scheduled banks are those banks which are registered under section 2 of RBI Act of 1934. Okay. Scheduled banks यानी that are registered with RBI, non-scheduled यानी that are not registered with RBI. वो बैंक होता है जो RBI के पास registration नहीं किया होता है. ठीक है. Now the scheduled banks can again further be divided into two different types. Okay, one is what we call it as the scheduled commercial banks and the other is what we call it as the scheduled cooperative banks. Scheduled commercial banks यानी their main motive is profit making. ठीक है, उनका main मकसद ही होता है profit making. जैसे कि public bank, private bank, foreign banks and regional rural banks. Public bank यानी government banks like SBI, private banks like Axis, foreign banks like Bank of America, regional rural bank. Here we will have central government, state government and sponsored bank. There will be three stakeholders in this particular RRBs who are the central government, state government and one will be sponsored bank. That is the reason if you see the RRB credit card or debit card, on the top it will be written like HDFC. So here HDFC meaning is, HDFC is the sponsored bank. So what percentage stake does central government have? What percentage does state government have? What percentage does the sponsored bank have? Do comment in the comment section. Okay. Now, cooperative bank are those banks which are with a motive of no profit, no loss. The banks which are in the motive of no profit, no loss. Okay, that are called cooperative banks. So here I use the term called scheduled commercial banks. If I use the term called scheduled commercial banks, you should be able to cope up with the discussion of what are exactly scheduled commercial banks. Okay, so who prepare the monetary policy? It will be prepared by the RBI's monetary policy committee. Okay, RBI's monetary policy committee says that what it says is RBI will issue an ultimatum to the scheduled commercial banks.
Clear that the directions of the monetary policy tools are available to the scheduled commercial banks. Okay, suppose what is a bank? A bank is a financial institution which will accept the deposit, which will give the loans. A bank is a financial institution which does accept the deposit and which will give away the loans. Okay, for example, in a bank, the deposits are 150 crore. The loans or withdrawals on a day are 50 crore. What is the closing balance of the bank? 100 crore. 150 minus 50 कितना आएगा? 100 crore. This 100 crore whatever the bank is left with, ठीक है? ये जो भी 100 करोड़ है बैंक के पास जो बचा है, this 100 crore is actually known as NDTL. क्या कहेंगे उसे? NDTL. That is net demand and time liability. Net demand and time liability. This was asked in your last to last year examination. What is the full form of NDTL in banking term? Net demand and time liability, NDTL. ठीक है. So RBI says out of NDTL, a certain percentage should be kept in the form of cash with RBI. Certain amount should be kept with RBI in the form of cash. जो भी RBI कहता है कि RBI के पास ही पार्क करना है, RBI के पास ही रखना है in the form of cash, ठीक है? That particular idea is what we call it as the CRR. What do we call that, ma? CRR, cash reserve ratio. Okay, RBI also says certain percentage has to be kept, maybe in the form of cash or non-cash. Maybe in the form of cash or non-cash. That is maybe gold, maybe securities, maybe bonds, so on and so forth. Whatever the percentage that has to be kept with itself, किसके पास रखना है जी? With itself, खुद के पास. That is what we call it as the SLR. क्या कहेंगे उसे? SLR, statutory liquidity ratio. Okay, now at times RBI can lend money to the scheduled commercial bank. SCB के पास पैसे कम होता है, RBI can lend money to the scheduled commercial bank. When RBI is lending money to the scheduled commercial bank, they will charge a certain rate of interest. They will charge a certain rate of interest. That rate of interest is called repo rate. That rate of interest is called what, ma? Repo rate. At times, scheduled commercial banks will also give money to RBI. Scheduled commercial bank can give money to RBI. उस वक्त जो भी interest charge करेंगे, whatever the interest that is being charged there is called reverse repo rate. It's called what, ma? Reverse repo rate. So understand, repo rate is the rate of interest that is charged by RBI. Reverse repo rate is the rate of interest charged by scheduled commercial bank. So repo rate will be higher and reverse repo rate will be lower. Okay, always repo rate shall be high. Now, so what I said, inflation, demand pull inflation. Under demand pull inflation, we said too much money is chasing too few goods. What did we say, ma? Too much money in the economy is actually chasing too few goods. That is called inflation. So already we are assuming that money supply in the economy is high. यदि inflation होगा तो money supply को control करना है. So how do we control the money supply? See, what I said, if CRR is increased from 5% to 7%, यदि CRR को हम बढ़ाएंगे 5% to 7% suppose, then RBI के पास cash ज़्यादा होगा, because the scheduled commercial bank will park more money with Reserve Bank of India. When cash increase हो रहा है, then scheduled commercial bank के पास जो cash है, that will actually become less.
वो कम हो जाएंगे, एंड ये कम होने के वजह से, ठीक है, विद द डिक्लाइन इन द कैश विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, देन ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इनटू लेस डिमांड फॉर लोन्स कम डिमांड करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, नो, लेस डिमांड फॉर लोन्स बिकॉज पैसे कम है, मनी इज बिकमिंग लेस, बट इफ द डिमांड कम्स obviously we will raise the interest बढ़ाएंगे, then they will be going for less demand for the loans, then money availability with the public will go down, money supply will decline, and it is a inflation control. उसे हम क्या कहेंगे जी? Inflationary control mechanism or inflationary control activity. Okay, now even if we increase the SLR, then also the same repeats, then also the same will be repeated, because SLR if we are increasing, then scheduled commercial bank के पास जो cash है that will increase, less demand for the loans, more money availability with the public will decline, money supply will go down, and it is also considered to be a inflationary control mechanism. Okay, now if we increase the repo rate, then what happens? Increase the repo rate, then repo rate is the interest given by RBI to the scheduled commercial bank. Okay, now if we increase the repo rate, then scheduled commercial banks will lend more money to RBI, more interest, they lend more money to RBI, Reserve Bank of India. When they are lending more money to the RBI, then obviously it is resulting scheduled commercial bank के पास जो भी cash है वो कम हो जाएंगे, demand will decrease, money availability with the public decrease, money supply go down, inflation control. Okay, now the activity with reverse repo rate is the rate of interest that is charged by scheduled commercial bank for giving money to the RBI, clear, for giving money to the RBI. Now see, understand, if the reverse repo rate is increased, then also scheduled commercial bank, because they are getting more interest, no, they are getting more interest, scheduled commercial bank will lend more money to RBI, okay, cash will become less, demand will become less, money availability will become less, money supply will become less, and it is a inflationary control. So they are all different tools that are monetary policy tools that are available to control the inflation. What are them? CRR, SLR, repo rate, and also we will be having the reverse repo rate. Okay, now we will take one question. Consider the following statements. The first statement, it says, in inflation, RBI should follow monetary policy which is cheap policy. We have two monetary policies. One is cheap monetary policy and the other is called dear monetary policies. Okay. Next is, in times of inflation, central government should go for expansionary fiscal policy. Central government should go for expansionary fiscal policy. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both 1 and 2. Option D,
None of the above. Okay. So if you understand cheap money policy and dear money policy, expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy, you will understand these terms very clearly. But if you still want to try this question, you can answer me in the comment section. Okay, move ahead. Now what I said, fiscal policy. Fiscal policy is a policy which is enacted by central government. Okay, fiscal policy. Monetary policy is a policy which is prepared by the Reserve Bank of India. Fiscal policy is a policy which is prepared by whom? Central government. Okay, so under fiscal policy, what all will be the components? The taxes will be there, subsidies will be there, budgeting will be there. Within budgeting we'll have few schemes also. Okay, all these will be components of fiscal policy. Fiscal policy will basically deal with two components. One is the revenue component also, and the other is the expenditure component as well. Okay, so during inflation, the taxes by the central government should increase or decrease. That is one thing which we need to understand. And during inflation, whether the government should go for contractionary fiscal policy or expansionary fiscal policy, that we will understand in a much detail now. See, I am saying already money supply is huge, money supply is high in the economy. When the money supply is high, the government should put certain efforts to decrease the money supply. In order to decrease the money supply, the government should increase the taxes. The government should increase the taxes. Yeah, at times of inflation, when money supply is high, I said no, too much money in the economy is chasing too few goods. Okay, now just understand. Expansionary fiscal policy, and we have a term called contractionary fiscal policy. Okay, expansionary fiscal policy is something, taxes are less but the government spending is huge. Taxes are less while the government spending is high. That is called expansionary fiscal policy. Contractionary is we are getting more revenue. Taxes come ho rahe matlab revenue is getting less, no? Revenue is getting less. So under contractionary fiscal policy, taxes are increasing. Taxes are increasing. At the same time, government spending is decreasing. Government spending is decreasing. That is what we call it as the contractionary fiscal policy. Matlab revenue increasing, but the government spending is actually declining. Okay, that is what we call it as what, ma? Contractionary fiscal policy. So which policy we should adopt? Is it contractionary fiscal policy or is it expansionary fiscal policy at the times of inflation? Any idea? At the times of inflation, we said we should increase the taxes, or else we should increase the tax revenue also. When we are increasing the tax revenue, naturally it will be resulting into the idea of controlling the inflation. It will be resulting into the idea of controlling the inflation. Just a second. Okay, so expansionary fiscal policy is also known as one another term called pump priming. Expansionary fiscal policy का दूसरा नाम क्या है जी? Pump priming. Pump priming is another term used for
expansionary fiscal policy. Okay, what I said, taxes are less, government spending is huge, that is called expansionary fiscal policy. Taxes are high, government spending is less, that is called contractionary fiscal policy. Okay, if the government spendings are equal to government expenditure, if the government spendings are equal to government expenditure, then we call it as fiscal neutral policy. If the government spendings are balanced with the government expenditure, उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे जी? Fiscal neutral policy. Okay. Now, after this, see, we will be taking the potential GDP curve. We'll take the potential GDP curve. It would be looking like this. Okay, like 2022, 2024, sorry, 2026, 2028, 2030. Likewise, we are taking. So, what can be the expected GDP in the years to come? Okay, like GDP percentage 5, 10, 12, 18, likewise. So, potential GDP curve will be moving upward direction. So, what is the potential? Potential GDP is if you are studying 5 hours a day today. If I ask you what is your potential, then you say my potential is 8 hours study per day. Somebody say my potential is 10 hours study per day. Similarly, if GDP is growing at 6% today, 6.8 to be very accurate with you, 6.8% today, what is the potential of the GDP in the coming years? That can be 10%, that can be 12%, that can be 13%, likewise. Okay. This curve is always upward. That is what we call it as the expected GDP growth. क्या कहेंगे उसको? Expected GDP growth. Expected GDP growth मतलब it includes of all the sectors. Like we have primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Primary sector, that is called agriculture and allied activities. Like we have agriculture, that is food grains, forestry, fishery, poultry, so on and so forth. Secondary sector, we have manufacturing, industries, electricity, gas, so on and so forth. Tertiary sector, that is services. We have hotel, trade, tourism, banking, public administration, so on and so forth. So for example, if the primary sector growth rate is 5%, secondary sector growth rate is 10%, tertiary sector growth rate is 12%. What will be the growth rate of India? क्या होगा growth rate of India? See, 5, 10 and 12. Then we will do 12 plus 10 plus 5, 22 plus 5, 27 by 3. क्या आएगा? What will be the growth rate of India? 27 by 3, approximately 9%. 9 plus आएगा, ठीक है? 9 point something will be there. So that will be the growth rate. And but what will be the potential if India is growing at the same speed? What will be the potential? That is called potential GDP. Okay, what it indicating? In 2024 it may grow at 6%, 2026 it may touch 10%, 2028 it may touch 13%, likewise. But does practically this happen? No. Practically what happens is there will be certain business cycles like this. It may go high, sometimes it may go down, it may go very high, it may go very low also. Okay, that is what we call it as the business cycles. Business cycles.
Business cycles are ups and downs in the potential GDP. Business cycles are nothing but they are the ups and downs in the potential GDP. Ups and downs in the potential GDP. Okay. So counter, we have two important terms associated here. One is what we call it as counter-cyclical fiscal policy and pro-cyclical fiscal policy. Okay, do understand this thing. When economy here in this first scenario, economy ko kya ho raha hai dekho. In the first scenario, economy is growing at speed more than what is expected. It is growing at a speed which is higher than what is being estimated. If it is growing at a speed which is higher than the estimation, that is what we call it as the boom. What do we call that boom? If GDP is growing at lesser speed than what is being estimated, जो भी estimate हमने किया है उससे कम speed में यदि जा रहे हैं, ठीक है, that is what we call it as the recession. What do we call it as the recession? So what exactly the government should do? Is it pro-cyclical fiscal policy or counter-cyclical fiscal policy? Let us understand. See, we'll make this table. One column I am taking it as boom and the other column I am taking it as recession, suppose. What the government should do in pro-cyclical, meaning going according to the economic cycles. If it is boom, going in favor of that. If it is recession, going in favor of recession. Okay. So in boom, the income of a person is actually increasing. Income of the person is actually increasing. Income बढ़ रहा है मतलब taxes को बढ़ाना या कम करना, ठीक है. Actual में क्या करना है, हमें बढ़ाना चाहिए. लेकिन what we are doing at the times of boom, the taxes जो है are being reduced. Boom मतलब the government is already earning more. I mean the people are earning more. The government should spend less. But even in times of boom, pro-cyclical fiscal policy, the government spendings are increasing. Government spendings are increasing. When there is a recession, the government should assist. Taxes should go down. But here, taxes are going high. Taxes are being increased. Pro-cyclical, matlab going according to the cycles. Government spending should increase, लेकिन government spending जो है are decreased. Government spendings are decreased. That is what we call it as the pro-cyclical fiscal policy. And the second one we have fiscal policy. This is counter-cyclical fiscal policy. Counter, matlab going against that. Boom, people are earning more. Earning more matlab we are taxing more. Taxes are more. People are earning more. No need to government to invest more on welfare and other developmental activities. So here the government spendings are becoming less. Government spendings are becoming less. During recession, people are already suffering. Then government will reduce the taxes. Taxes will decline. During recession, government spendings should actually increase. Government spendings should actually be increased during the recession. So this is what we call it as the pro-cyclical fiscal policy, and this is what we call it as the counter-cyclical fiscal policy. So during the boom and recession, the government should actually go for counter-cyclical fiscal policy. So which policy should be actually adopted by the government at times of boom or at times of recession? If somebody asks you, that is the counter-cyclical fiscal policy. Okay, so that should be the agenda of the government. So we have discussed inflation and we have connected with slightly
fiscal policy. Okay. After that, we have connected with fiscal policy also, we'll connected with the monetary policy also. Okay. Now we will take how do we measure the inflation? How do we measure the inflation? So we have basically 2 to 3 methods of measuring the inflation. That is what we call it as WPI. Other one is called CPI, and to some extent we can also call GDP deflator. GDP deflator also as one of the measure of inflation. GDP deflator. Okay. WPI means wholesale price index. Wholesale price. CPI means consumer price index. Okay. And when we speak about GDP deflator meaning it is nominal GDP by real GDP. You remember, no? Earlier we discussed what is nominal GDP formula and what is real GDP formula. So GDP deflator is nominal GDP by real GDP into 100. Nominal GDP by real GDP into 100. Clear? That is called GDP deflator. Okay. Now WPI. See, WPI is nothing but wholesale price index. WPI is nothing but what, ma? Wholesale price index. Okay. So under WPI, what exactly we do is we calculate inflation. Inflation is nothing but price hike till the wholesale level. Under CPI, we do calculate inflation till the last level. Last level यानी consumer level. We do calculate inflation till the last level. That is the consumer level. Okay. For example, I am taking 2 years, 2022, 2023. So for example, a good will be involved in the process of production, distribution, wholesale dealer, retail dealer, consumer. This is how a good goes from producer to the last level. Okay. If the production level the price was 10 rupees, distributor को 12 रुपए में मिला एक बिस्किट पैकेट मान लो, wholesale dealer I've got it at 15 rupees, retail dealer को 18 rupees में मिला, consumer को 20 rupees में मिला. ठीक है. If the price of same biscuit packet is increased in 2023, 10 became 20, 12 became 22, 15 became 27, sorry, 25, this have become 28 and this have become 30. So here see, price is increased at this level also, at last level also. Price is seen increased at the wholesale level also and the consumer level also. If we calculate inflation only till this level, then that is called WPI, wholesale price index. If we do calculate inflation till the last level तक यदि हम calculate करेंगे, फिर उसे हम क्या कहेंगे जी? CPI. That is what we call it as the consumer price index. Okay. So another question is WPI will be releasing the inflation for goods only. केवल goods ही आएंगे WPI के अंदर, लेकिन CPI will be releasing inflation for both goods and services. This is going to release the inflation for both goods and services. Okay. WPI will be released by Ministry of Industry and Commerce. WPI shall be released by which ministry, ma? Ministry of Industry and Commerce. While we speak about CPI, CPI is something which has been released by, CPI will have
impact of inflation on different individuals, like agriculture laborers, CPI AL we call, like IW industrial workers, okay, like industrial laborers, CPI combined rural plus urban. So since laborers are also involved there, workers are also involved there, so CPI will be released by, in fact, two ministries, released by Ministry of Labor also plus Ministry of Statistics and Program Implementation also. दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होता है, वन इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द अदर इज नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation. Okay, I hope that the idea of inflation is coming very, very clear to all of you. Okay, let us understand in this particular lecture something about economic growth and economic development. So this is another important dimension which you will have to cover in the upcoming UPSC examination. So economic growth and development, if somebody will ask you, then you should actually go with multiple dimensions, such as the dimension of what is growth and what is development. If you understand the core concept clear, like economic growth is something which is quantitative in nature. Economic growth is quantitative in nature. While we speak about economic development, it is quantitative plus qualitative nature. Okay, quantitative plus qualitative nature. Meaning, if the country grows in quantity also and in quality also. Quality matlab there is a change, social change. Caste system have been eliminated. Women are getting more and more empowered. Technology has been upgraded. Likewise, if we bring any qualitative changes, then that we will call it as what? Economic development. So, economic growth is something which will be taking into consideration single factor. Economic growth shall be taking into consideration what ma? Single factor. While economic development will be taking into consideration multiple factors. Economic development will be taking into consideration more factors, multiple factors I call. Okay. Economic growth, again, understand, economic growth is a phenomenon which is more necessary to the developed economies. Economic growth is a phenomena which is a necessity or the need of developed economies, because the countries which are already considered to be developed, so जब already उनका development हो चुका है, development होने के बाद उनको क्या चाहिए होता है? They need to maintain the development. शाहरुख खान बादशाह बन गया बॉलीवुड का. शाहरुख खान बादशाह बनने के बाद वो बादशाह शाहरुख खान हमेशा कहता है मुझे बादशाह बनना ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बादशाह का जो टाइटल है उसे मेंटेन करना बड़ी बात होता है. वैसे ही एक कंट्री मान लो यूएसए है, ठीक है, यूएसए इज कंसिडर्ड वर्ल्ड वाइड एज द डेवलप्ड इकोनॉमी ऑल टुगेदर, लेकिन वो डेवलपमेंट जो हो चुका है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ फिनोमिना व्हिच इज नेसेसरी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, इट इज अ नेसेसरी फिनोमिना फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज. ये किसको जरूरत है जी? इट इज अ नेसेसरी फिनोमिना फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज. ओके, नाउ economic development is something, economic growth can be understood with the idea of GDP, NDP, so on and so forth. उसका जो growth rate है उससे हम economic growth को हम समझते हैं. While economic development को समझने के लिए हमें HDI का जरूरत होता है, ठीक है, which is the best indicator of economic development, human development index, which is the best indicator of economic growth, GDP growth rate, others, all those figures are the factors of economic growth. Now, when we speak about the factors of economic growth, आपसे examination में ऐसे भी पूछेंगे, what are the different or the various factors of economic growth? Okay, ध्यान से देख लीजिएगा. सबसे पहला फैक्टर होता है जी यहाँ पर, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस यानी जिस भी देश के अंदर
सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होता है उसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। इंडिया के पास भी अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेस है, लेकिन दो एक्सेप्शन है इसका, एक है जापान और दूसरा है सिंगापुर। ये दो ऐसा देश है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेस भले नहीं है लेकिन वो डेवलप्ड माना जाता है। इनफैक्ट एशिया, पूरा एशिया में देयर आर ओनली 2 कंट्रीज व्हिच आर treated or considered to be the developed economies. One is Japan and the other being called Singapore. ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस के बाद चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट। What do we need after natural resources, ma? Investment. So if you understand, in India we have basically 2 sources of investment. One is called domestic investment and the other is called what, ma? Foreign investment. Domestic investment यानी Indians are investing in India like Reliance or Tata. Foreign investment यानी foreigners who are investing in India. ये 3 sources से आते हैं हमें। एक है FDI, दूसरा है FPI, तीसरा है FII। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII का होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FDI, FPI एंड FII। FDI का मतलब होता है इट इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश का विकास के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे ना, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन FPI और FII जो है ये इन्वेस्टमेंट है फॉरेनर्स का, लेकिन इन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ इंडिया। भारत का जो भी स्टॉक मार्केट होता है ना जी, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे दैट आर नोन एज FPI एंड FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू बी वेरी क्लियर विथ यू, ये एक एंटिटी या फिर एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्ट करेंगे। FII का मतलब होता है एक कंपनी के द्वारा, ठीक है, पूरा कंपनी, भारत का कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी तीसरा फैक्टर जरूरी होता है, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज द टेक्नोलॉजी। हर तरह के टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम टेक्नोलॉजी का बात कहेंगे ना, टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें आते हैं, ठीक है, जैसे कि वी आर एंटरिंग इनटू बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, वो टेलीफोन कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर एडवांसमेंट्स हो सकता है। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजीज वी आर एडवांसिंग। ठीक है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद होगा जी कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज होता है जो हर कंट्री को डेवलपमेंट करना जरूरी होता है। देखो, इकोनॉमिक जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, द कंट्रीज व्हिच आर ऑलरेडी आर डेवलप्ड कंट्रीज, उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी नहीं है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा अमेरिका का अध्यक्ष जो बाइडेन अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव में प्रचार करते वक्त वो कभी ये नहीं कहा होगा कि मैं यदि राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का तो मैं रोड बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, ब्रिज बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देयर इज अ मच लार्जर नेसेसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देन अ कंट्री विल हैव to improve in कम्युनिकेशन, ठीक है, वो तो हो गया, कनेक्टिविटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, इन सारे चीजों में भी एक कंट्री को इंप्रूवमेंट दिखाना चाहिए। ठीक है, कंट्री शुड ऑल्सो इंप्रूव, एक कंट्री का किसी भी देश का इंप्रूवमेंट इसमें भी दिखना चाहिए जिसे हम कहते हैं सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स में भी एक कंट्री को अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना चाहिए। जैसे कि सोशल इंडिकेटर्स में अभी भारत के हिसाब से देखा जाए तो
वी हैव IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर 1 year of age for every 1000 population. हर 1000 population में before they attain 1 year of age, the total number of children that are dying, that is known as what my infant mortality rate, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारा MMR, MMR इसे हम कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। MMR का मतलब होता है जी मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो होता है जहां पर हम ये बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल डाइंग फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन, इसको हम देखेंगे फॉर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू के वजह से जो भी महिलाओं का मृत्यु होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारा TFR, उसके बाद आएंगे कौन सा जी हमारा TFR। TFR का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स गिवन बाय अ वुमन इन 1 लाइफ टाइम, ठीक है। पूरा एक लाइफ टाइम में महिलाओं कितना बच्चों को जन्म देता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। दैट इज like 2.4 2.6, यानी on an average every woman is giving birth to 2 children या 3 children in her 1 lifetime, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब सोशल इंडिकेटर्स में एक और चीज आता है जी, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द birth rate, total number of new births, death rate, total number of deaths for every 1000 population, birth rate उसे कहते हैं, death rate उसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमें इंप्रूव करना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इसको हम 2 अलग अलग चीजों में पढ़ना है, दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द मेन ऑल्सो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द वुमेन ऑल्सो, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेन का कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत में और वुमेन का कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत में, ठीक है। देन लिटरेसी रेट्स में किसी भी देश को इंप्रूव करना चाहिए, लिटरेसी रेट्स यानी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और लिटरेसी रेट, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे, लिटरेसी रेट्स इन अर्बन एरियाज एंड लिटरेसी रेट्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। शहरों में कितना लिटरेसी रेट है, गांवों में कितना लिटरेसी रेट है, ठीक है। दैट इज ऑल टुगेदर सोशल इंडिकेटर्स। मैंने बताया आपको एक फैक्टर और है, शुड परफॉर्म वेल इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, should be performing well in all the sectors of economy, यानी हर सेक्टर इकोनॉमी में पैरेलली अच्छा ग्रो करना चाहिए। इंडिया के 3 सेक्टर होता है जी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सेक्टर होता है सर्विसेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है जी गौतम माथुर, इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है मां, गौतम माथुर। गौतम माथुर जी का ये कहना है, द सेक्टर विच रजिस्टर लोएस्ट ग्रोथ रेट will be the growth rate of the country। क्या कहा जी गौतम माथुर ने, द सेक्टर विच एवर रजिस्टर द लोएस्ट ग्रोथ रेट shall be the growth rate of the country। वो इसलिए बताया क्योंकि you have taken the example of a bullock cart, ठीक है। किसका एग्जाम्पल लेकर के बताया उन्होंने, बुलक कार्ट का एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने ये बताया था कि बुलक कार्ट, मान लो 2 बुल आगे पीछे जा रहे, ठीक है, मतलब 2 बुल है, ये बुलक कार्ट है मान लो, ठीक है, और ये पहिया, ठीक है, ये टायर्स है, ठीक है। जब एक बुल जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में
और दूसरा बुल जाता है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में। फिर भी जाने के बाद बुलक कार्ट का स्पीड क्या बन जाएगा? बुलक कार्ट का स्पीड तो सबसे छोटा जो है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वही बुलक कार्ट का स्पीड बन जाएंगे। वैसे भी जो भी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, मान लो एग्रीकल्चर 3% से ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग 5% से ग्रो कर रहे हैं, सर्विसेज 10% से ग्रो कर रहे हैं, तब सेक्टर विच एवर रजिस्टर द लोएस्ट ग्रोथ will be the growth rate of the economy। ये किसका कहना है? गौतम माथुर जी का कहना है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंटल थियरीज को दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरीज। ठीक है, डेवलपमेंट थियरीज वैसे 3 अलग अलग थियरीज हैं जी, उसके डिटेल में हमें जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रॉडली हमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी कार्ल मार्क्स का जो थियरी है। कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देयर विल बी 6 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनके हिसाब से देयर विल बी 6 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि प्रिमिटिव स्टेज, ठीक है, स्लेवरी स्टेज, फ्यूडलिज्म स्टेट, ठीक है, कैपिटलिस्टिक स्टेट, सोशलिस्टिक स्टेट, कम्युनिस्टिक स्टेट। ठीक है, इस तरह का 6 स्टेजेस उन्होंने बताया, कौन ने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डब्ल्यू रोस्टो। डब्ल्यू रोस्टो के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 स्टेज में होता है, 5 स्टेज में होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी कहता है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ कहता है। ठीक है, टेक ऑफ स्टेज हम कहेंगे, टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, हाई मास कंजम्पशन स्टेज, हाई मास कंजम्पशन स्टेज। सो ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेके हाई मास कंजम्पशन तक, जो हाल ही में कुछ ही देशों में ये दिखाई देता है, क्योंकि उनका कमाई भी ज्यादा है और उनका खर्चा भी ज्यादा है। द कंट्री विल अर्न मोर, द कंट्री विल बी स्पेंडिंग मोर ऑल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे जी हमारा कुजनेट्स थियरी। कुजनेट्स थियरी, कुजनेट्स थियरी का हिसाब से 3 स्टेजेस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने बताया था। There will be 3 stages of economic development according to whom? According to the Simon Kuznets। इनका कुजनेट्स का जो है कुजनेट्स कर्व, साइमन कुजनेट्स जी का कुजनेट्स कर्व भी हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो इधर देख लीजिएगा ध्यान से। प्राइमरी स्टेज होता है जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का ग्रोथ होंगे। फिर होगा सेकेंडरी स्टेज जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है। फिर होगा टेरिशरी सेक्टर जिसके अंदर सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो आज के दिन में देखा जाए तो पूरा दुनिया में देयर आर many countries which are considered to be economically developed, क्योंकि उनके पास हर फैक्टर है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकता है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा। तो इस हिसाब से देयर आर मेनी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड विच आर ट्रीटेड और एल्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली, हमने सोशल डेवलपमेंट भी साथ ही देख लिया है। ठीक है, उसके बाद आएगा जी हमारा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं हम। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टुडे should not impact development of the future. The development of the country should not impact the development of the future. That is called sustained development. ठीक है, आज हम कुछ इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे, वो इंडस्ट्रीज क्या करेंगे? आज पोल्यूशन एमिट करेंगे, दे विल बी एमिटिंग सर्टेन पोल्यूशन। ठीक है, वो पोल्यूशन की वजह से शायद इस जनरेशन में आने वाले 10 साल तक या फिर आने वाले 20 साल तक कोई उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन 20 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, that next generation will definitely experience some difficulties with the previous emissions, with the previous
पोल्यूशंस ऑल टुगेदर। तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पर समझना है, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टुडे शुड नॉट इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो यदि आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो पूरा दुनिया में, ठीक है, पूरा दुनिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1992 में एक समिट कंडक्ट किया था जी हमने, जिसे हम अर्थ समिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? अर्थ समिट। वो अर्थ समिट हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो, दैट इज इन ब्राजील। ये एक ऐसा समय था जहां पर पूरा दुनिया एक साथ, पूरा दुनिया एक साथ बैठ करके एक कॉमन एजेंडा पे डिस्कशन किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द सस्टेनेबल प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ के बारे में पूरा दुनिया एक साथ बैठ के डिस्कशन किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी देश को, डेवलप्ड कंट्रीज ही उसका जिम्मेवारी लेना चाहिए, लेकिन किसी भी देश को हमने जिम्मेवारी नहीं दिया था उस वक्त। सॉरी। इसीलिए 1997 में एक और समिट हुआ था जी, जिसे हम क्योटो समिट कहते हैं। इस क्योटो समिट का कंक्लूजन है, आउटपुट है, दैट इज कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे उसे? क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या है, पूरा कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज, पूरा देश को डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज करके हम बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ही आज का, क्योंकि उनका पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है कहाँ पे? यूएस और यूके में, और इन्हीं दो देश को हमने जिम्मेवारी कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो चुका है, वो फंडिंग करना चाहिए किसको? डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक है, क्यों फंडिंग देंगे भाई? वो फंडिंग इसलिए देंगे क्योंकि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्लाइमेट चेंज पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, दे विल आल्सो बी फाइटिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल का कोई आपसे पूछे इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का मेजर ड्रॉबैक वो होता है कि यूएसए एंड यूके हैव नॉट रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि असली चोर तो वही दो देश है, लेकिन वो दोनों देश भी, ठीक है, दोनों देश भी दे हैवंट साइंड द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन अर्थ समिट 1992 का एक और इंपॉर्टेंट आउटपुट है, आउटपुट ऑफ अर्थ समिट 1992। यदि आपसे पूछे हैं, आउटपुट है यूएनएफसीसीसी को हमने फॉर्म किया है, यूएनएफसीसीसी दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और एक आउटपुट है दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका एक आउटपुट होता है। ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसका आउटपुट है, स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स इसका एक आउटपुट हम कहेंगे। रियो डिक्लेरेशन, रियो मतलब रियो डी जेनेरियो। ठीक है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हमने ये समिट को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसलिए कौन सा डिक्लेरेशन आया जी? रियो डिक्लेरेशन। अभी 2015 से हमने एक और कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसे हमें अचीव करना चाहिए पूरा 17 गोल्स। हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन टोटल मा? 17 गोल्स आर देयर इन टोटल। ये 17 गोल जो है उससे हमें अचीव करना है बाय द ईयर 2030। कब तक अचीव करना है जी? 2030 तक। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो पूरा 17 गोल्स होता है, जैसे नो पॉवर्टी, नो हंगर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यदि आपसे ऐसे भी सवाल पूछेंगे कोई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर द रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? दे आर द
रिप्लेसमेंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में पूरा 8 गोल्स है। देयर आर अ टोटल ऑफ 8 गोल्स इन एमडीजी। इसको हमने अचीव किया है बिटवीन 2000 टू 2015। 2000 से 2015 तक हमने ये 8 गोल, जिसे हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहेंगे, that was actually be made into existence। ठीक है, तो the replacement of MDG is called रिप्लेसमेंट ऑफ एमडीजी को ही हम एसडीजी कहेंगे। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, sorry, SDG, sustainable development goals. So there are how many goals, ma? 8 goals. How many goals in SDG? 17 goals. Okay, now, so Rio Summit was conducted in Rio de Janeiro, ठीक है, लेकिन Rio plus 10 कहाँ कंडक्ट किया? Rio plus 10, if somebody asks you where was Rio plus 10 conducted, Rio plus 10 मतलब 2002 में इसको हमने कंडक्ट किया है। That was at a place called Johannesburg in South Africa। कहाँ पर हमने सब कंडक्ट किया है जी? क्योंकि इस तरह का आउटडेटेड फैक्ट्स भी हाल ही में बहुत ज्यादा पूछ रहा आपसे। दैट इज कॉल्ड जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट, टू मेजर द economic development, to measure the economic development, हमारे पास एक आइडिया है that is called HDI। What do we call ma? HDI यानी Human Development Index। Human Development Index, ठीक है। उससे पहले हम जीडीपी से ही किसी भी देश का विकास को हम मेजर करते थे, लेकिन उसके बाद आजकल हमने HDI के हिसाब से हम देश का विकास मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1990। ये कब प्रिपेयर किया था जी? 1990 में। कौन ने प्रिपेयर किया इसको? महबूब उल हक। तो ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट महबूब उल हक। ये कौन सा देश से है? ये पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, ठीक है, he was assisted by Amartya Kumar Sen also. He's an Indian economist, not just an economist, he is also the Nobel Prize winner in economics from India। दो लोग हैं इंडिया से जो नोबेल प्राइज जीता है इकोनॉमिक्स में, एक है अमर्त्य कुमार सेन और दूसरा है अभिजीत बनर्जी। दूसरा पर्सन कौन है जी? अभिजीत बनर्जी। नाउ दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शैल बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बेसिकली 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स को मेजरमेंट में लेंगे। वन इज कॉल्ड एजुकेशन, other is called health, other is called standard of living। So it's an annual report released by UNDP every year। हर साल UNDP United Nation Development Program will be releasing the HDI report, ठीक है। 3 मेजर्स लेंगे एजुकेशन, इसमें कवर किया जाएंगे, ठीक है। दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसमें 2 अलग अलग चीजें देखेंगे, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। यानी कि ऑन एंड एवरेज एक पर्सन कितने साल स्कूल में, मतलब स्कूल मतलब पढ़ाई के लिए स्पेंड कर रहे हैं, और कितना करना चाहिए। कितना करना चाहिए मतलब वो हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना कर रहा है वो हो जाएगा हमारा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जी हमारा कौन सा? हेल्थ। हेल्थ के अंदर हम देखेंगे दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, ठीक है। बर्थ रेट बढ़ाना है, डेथ रेट कम करना है, ठीक है। इंडिया में जो भी डिसीजेस होता है, ठीक है, मतलब पूरा देश में इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, डिसीजेस होता है, वो डिसीजेस के बाद जैसे एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, उसका रिस्पॉन्स एक देश कैसा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंडिकेटर। फिर हो जाएगा जी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आएगा अपना
हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ये सब मेजर्स हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम देखेंगे। तो इस साल का HDI पूरा 191 कंट्रीज के लिए दिया है। इसमें फर्स्ट कंट्री कौन सा है, फर्स्ट रैंक किसको मिला है, इंडिया का रैंक कितना है, लास्ट रैंक किसका है, इंडिया का नेबर्स जैसे श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इन देशों का क्या क्या रैंक है, ये सब आप अभी कमेंट सेक्शन में डालेंगे। यू विल बी कमेंटिंग ऑल दिस रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? ये कौन रिलीज करेगा, UNDP। UNDP का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दिस UNDP विल बी रिलीजिंग, कितने दिन में एक बार रिलीज करेंगे इसको, हर साल में एक बार, ठीक है। इट इज एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमने देखा है। उसके बाद आपको क्विक रिवीजन करना है टैक्सेशन के बारे में, ठीक है, टैक्सेशन के बारे में। इसके अंदर ही हम अभी GST भी ला देंगे। तो टैक्सेशन, टैक्स वगैरह होता क्या है, टैक्स एक तरह का रेवेन्यू बोला जाता है गवर्नमेंट का, ठीक है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे आम आदमियों का नेशनल डेवलपमेंट के अंदर, एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा आपको खुद, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी आप जो भी टैक्स भरा है वो वापस आपको ही दिया जाएगा ना, इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बैक टू यू, ठीक है। ये एक रिपीटेशन प्रोसेस है, जब तक आप अर्न कर रहे, जब तक आप कमा रहे हो, तब तक आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन एज वेल। तो टैक्स का पर्पस क्या कहेंगे जी हम, 4R, रेवेन्यू, रिप्रेजेंटेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिपीटेशन, ठीक है। टैक्सेस वैसे दो तरह का होता है जी, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया है, इनकम टैक्स का स्लैब अभी बदल गया, ठीक है। कितने तक का टैक्स एग्जम्पशन है इनकम टैक्स में, अभी 7 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन है, यानी किसी भी आदमी का 7 लाख तक का कमाई है उनको कोई इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको फॉर्म 80 सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद होता है डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेट टैक्स, यानी जो कंपनीज पे कर रहे हैं। उसके बाद होता है DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो होता है जो शेयर्स बांटते वक्त, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त जो भी टैक्स हम भरेंगे ना, उसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहेंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या फिर AMT भी कहेंगे उसको, या फिर MAT भी कहेंगे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या फिर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। यानी कोई भी कंपनी बिना प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट नहीं आए फिर भी उनको कम से कम टैक्स भरना है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उसके बाद आएगा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, FBT जिसे हम कहेंगे, FBT फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनी अपना एम्प्लॉयज को, ठीक है, कंपनी विल बी गिविंग इट टू द एम्प्लॉयज को अपना कुछ फैसिलिटीज जैसे होटल फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटीज देते वक्त उस पर भी टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ठीक है जी। लाइक जैसे वेल्थ टैक्स कहेंगे, वेल्थ टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स कहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस है भारत में, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के हमने आज GST ला दिया, ठीक है। GST कब से लागू हुआ है जी, GST लागू हुआ जुलाई 1, 2017 से, जुलाई 1, 2017 से। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर इसका है अमिताभ बच्चन जी। Who is the brand ambassador of GST? अमिताभ बच्चन is the brand ambassador of GST. इसका स्लोगन क्या है जी, वन नेशन वन टैक्स। स्लोगन क्या है माँ, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST
जीएसटी का वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसा सवाल पूछेंगे आपसे, पूछा जा सकता है, जीएसटी वर्किंग प्रिंसिपल is similar to GST's working principle is similar to option A customs duty, option B VAT value added tax, option C mod VAT modified value added tax, option D excise duty. तो सवाल सीधा आपसे पूछा है, जीएसटी वर्किंग प्रिंसिपल इज ऑन द लाइंस ऑफ, ये किसके लाइंस में हम कलेक्ट किया जाएंगे, ठीक है, जीएसटी वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन वैट। इसका सही जवाब क्या होगा जी, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी यानी इट इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। किसी भी हम बाहर बेच रहे या फिर किसी आइटम को हम बाहर से खरीद रहे, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वैट क्या है समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक किसान है, एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर क्या कर रहे हैं, कॉटन प्रोड्यूस कर रहे और वो कॉटन को बेच रहे 10 रुपए पर केजी का। सेल्स टैक्स मान लो इधर है 10%, तो टैक्स कितना है जी, 10% ऑफ 10 रुपए, 1 रुपए, ठीक है। फिर ये कोई क्लॉथ मेकर खरीदेंगे और उसको क्लॉथ तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे मान लो 100 रुपए प्रति मीटर का, टैक्स रिमेन द सेम 10%, तो कितना भरना पड़ेगा, 10 रुपए, ठीक है। एक कंपनी ने लिया है यूएस पोलो मान लो, और ये क्लॉथ लेके उन्होंने एक शर्ट बनाया और वो शर्ट को वो बेच रहे कितने पे, 1000 रुपए पर शर्ट, ठीक है। टैक्स रिमेन द सेम, टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 100 रुपीज, तो पूरा टैक्स कितना हो गया जी, 111। पूरा कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट कितना है, 1000 रुपए प्लस 111, ठीक है। ये सेल्स टैक्स लगेंगे तब कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट होगा 1111 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसे लिखा रहेगा ना शॉप में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। लेकिन वैट आएंगे ना, वैट भी मान लेते हैं, वैट इज ऑल्सो एट 10%, हम ये मानेंगे वैट भी 10% ही है, लेकिन वैट उसी पे टैक्स किया जाएंगे जहां वैल्यू ऐड हुआ है। क्लॉथ बिकेम कॉटन बिकेम क्लॉथ, कॉटन बिकेम क्लॉथ, ठीक है, कितना वैल्यू ऐड हुआ है जी यहाँ पर, 10 to 900, 90 रुपीज इज द वैल्यू एडेड। सो 10% ऑफ 90 कितना आएगा, 9 रुपए, 10% ऑफ 90 कितना आएगा जी, 9 rupees. So cloth have become shirt, cloth have become shirt. What is the value added here, 900 rupees. So 10% of 900 कितना आएगा जी, 90 rupees. So पूरा टैक्स कितना है, 99. कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट कितना है, 1000, तो पूरा कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितना हो जाएगा, 1099. दैट इज ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। सो जीएसटी भी कुछ इसी तरह का रोल प्ले करेंगे, लेकिन जीएसटी को हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ ओरिजिन टैक्स, लेकिन इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पर कोई भी सामान बिक रहा है, ठीक है, वेर एवर द गुड्स आर बीइंग सोल्ड। फॉर एग्जांपल the good is manufactured, a shirt is manufactured in Mumbai but is sold in Assam, but the tax will be collected or given to the state of Assam, क्योंकि उसे हम क्या कहेंगे, GST is a destination based tax। GST slabs कौन डिसाइड करेगा, GST council. Who will be deciding the GST slabs ma, they will be decided by the GST council, जिसका अध्यक्ष है finance minister of India. Who will be the chairman of the GST council, finance minister shall be the chairman of the GST council, और GST council के अंदर all state finance ministers, all state finance ministers will be the members of GST council. हर राज्य का finance ministers भी GST council का सभ्य रहेंगे, members रहेंगे, ठीक है। और GST council ने डिसाइड किया है स्लैब्स एज 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, और स्पेशल GST होंगे ऑन गोल्ड, ठीक है, गोल्ड पे स्पेशल GST लगेंगे 3% के हिसाब से। देयर विल बी नो GST ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे कोई GST नहीं लगेगा,
यदि पेट्रोल पे भी जीएसटी है तो हर स्टेट में एक ही प्राइस में पेट्रोल मिल सकता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ जीएसटी को हमने तीन अलग अलग टाइप्स में बांटा है, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। तो जीएसटी का आइडिया कौन ने दिया है? आइडिया ऑफ जीएसटी is given by Vijay Kelkar. So provided the idea of GST ma, idea of GST has been propounded by Vijay Kelkar. Vijay Kelkar is the person behind GST. ठीक है, जीएसटी का बिल कौन सा है? जीएसटी का बिल 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जीएसटी का एक्ट कौन सा है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 जुलाई 1 से ये इंप्लीमेंट हुआ है। आई होप इट इज कमिंग वेरी वेरी क्लियर। लेकिन एक्ट तो बन चुका था पहले ही, एक्ट बन चुका था 2016 में ही। ठीक है, एक्ट वाज एनैक्टेड इन द ईयर 2016 and the bill the act came into implementation or came into force from the year 2017 onwards. So taxes, the taxes, we will be having two different types of taxes हमने बोला है. One is called direct taxes and the other is called indirect taxes. Okay, now if you understand two points here, one is called planning and the other is called Niti Ayog. Okay, so planning का मतलब होता है, this is what we have adopted from a country known as Russia. ये प्लानिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश से लिया है जी? वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द कंट्री कॉल्ड रशिया. ठीक है, पूरा भारत में आज तक 12 5-year प्लान्स चला था. एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. देयर इज अ बुक टाइटल प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसका ऑथर है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया. कौन ऑथर है जो उसका? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया. और इसीलिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को हम प्लानिंग का फादर ऑफ प्लानिंग हम कहेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. ठीक है, प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 1950 ओनली, लेकिन फर्स्ट 5-year प्लान रैन फ्रॉम 1951 टू 1956. फिर सेकेंड चला है 1956 से लेकर 1961 तक. थर्ड 5-year प्लान रैन फ्रॉम 1961 टू 1966. इनिशियली यदि आप ये समझेंगे, फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन द हराद-दोमार मॉडल. हराद-दोमार मॉडल. हराद-दोमार मॉडल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू हराद-दोमार, HDGR इज इक्वल टू हराद-दोमार ग्रोथ रेट इज इक्वल टू S by COR. S by COR. S का मतलब होता है सेविंग्स, CO का मतलब होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो. COR का मतलब क्या है जी? कैपिटल आउटपुट रेशियो. यानी COR, इट इज COR का मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ कैपिटल टू आउटपुट. हम कितना कैपिटल लगा रहे हैं, कितना आउटपुट मिल रहा है. ठीक है, COR कैपिटल हमेशा कम रहना चाहिए, सेविंग इकोनॉमी में ज्यादा रहना चाहिए. ठीक है, इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा रहे और COR कम रहे, उसे हम HDGR कहेंगे. सेकेंड 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल. कौन सा मॉडल है जी? PC महालनोबिस मॉडल. इस PC महालनोबिस ने बोला था we will be going for more investments in industrial sector. ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे किस सेक्टर में? इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. दैट वाज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय PC महालनोबिस. ठीक है, नाउ थर्ड 5-year प्लान, इट्स एक्चुअली a triggering point और द शिफ्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इस समय हमने बहुत ज्यादा कष्ट मिला है. जैसे कि इसी समय में इंडो पाक वार हुआ है, इंडिया चाइना वार हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया 1964 में, 1966 में वापस लाल बहादुर शास्त्री जी का भी डेथ हो गया है. सो मेनी प्रॉब्लम्स वेर एसोसिएटेड. इसलिए इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने 1966 से लेकर 1969 तक प्लान हॉलिडे प्रपोज किया है.
दे आर प्रपोज्ड फॉर द आइडिया ऑफ प्लान हॉलीडे। इस प्लान हॉलीडे के समय हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसका फादर है इंडिया के अंदर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किया गया है HYV सीड्स। HYV सीड्स वेर यूज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्या कहेंगे जो उसको? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वेर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड ये HYV सीड्स को सबसे पहले मतलब पूरा दुनिया में द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस देश में इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट जैसे लॉन्च किया है? ब्राजील में, ठीक है। इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड एट द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, ऑल दोस, ओके। फिर उसके बाद आ जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 74 तक, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेकर 79 तक, लेकिन 1978 से लेकर 1980 तक हमें लाया है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम मोरारजी देसाई। 2 ही साल के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे और वो मोरारजी देसाई जी ने भारत में रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है। रोलिंग प्लान वो होता है विच इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्लान। रोलिंग प्लान को हम क्या कहेंगे जी? कंटिन्यूअस प्लान। फॉर एग्जांपल हमने 1951 से 1956 तक प्लान बनाया, ठीक है। फिर 1952 में फिर प्लान बनाएंगे 57 तक, 53 में बनाएंगे 58 तक। तो टारगेट्स विल बी रोल्ड आफ्टर एवरी 1 ईयर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फिफ्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट जस्ट अ सेकंड, फिफ्थ, ओके डन। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 टू 1985। इसी प्लान के अंदर इंदिरा गांधी जी का डेथ हो जाता है 1984 में। सिख राइट्स ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी प्लान में के अंदर आ जाएंगे। फिर सेवेंथ 5 ईयर प्लान आएंगे 1985 से 1990 तक। यहाँ पर जो भी ग्रोथ रेट होगा दैट इज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। यहाँ जो भी ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है ना जी, दैट ग्रोथ रेट इज एक्चुअली नोन एज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या फिर हिंदू ग्रोथ रेट। क्यों? हमने हमारा कंट्री को कंपैरिजन किया है साउथ कोरिया से। हम दोनों का आजादी लगभग एक ही समय में हुआ था। आवर इंडिपेंडेंस हैव बीन एट द सेम टाइम। तो साउथ कोरिया का जो भी ग्रोथ है, हिंदुस्तान का जो भी ग्रोथ है, उन दोनों का बैलेंस करते हुए मैंने हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट दिया है। 1990 से 1992 तक फिर से हमने प्लान हॉलीडे दिया है, क्योंकि इस समय में भारत में सबसे ज्यादा बीओपी क्राइसिस आ रहा था। बीओपी क्राइसिस, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहेंगे। क्लियर? वी कॉल इट एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। 3 कंपोनेंट्स होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड बीओटी, बीओआई एंड एनआर। बीओटी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द गुड्स। बीओआई का मतलब होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। Balance of invisibles, it is something which is related to the services, something which is related to the idea of services. NR का मतलब है net remittances, net remittances, यानी it is the difference between inward remittances and outward remittances. रेमिटेंसेस का मतलब होता है द फॉरेन करेंसी, बी डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन, रेनमीबी, सो ऑन। इनकमिंग फॉरेन करेंसी एंड आउटगोइंग फॉरेन करेंसी, इनका डिफरेंस होता है नेट रेमिटेंसेस। तो 1990 में ऐसा समस्या आ गया है कि भारत में सबसे बढ़िया वाला बीओपी क्राइसिस आ चुके थे। हमारे पास इंपोर्ट बिल पे करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह became the finance minister
इन 1991, क्योंकि 1991 में राजीव गांधी जी का भी हत्या हो गया था. He was assassinated after his primary involvement in Operation Blue Star. किसमें इन्वॉल्व थे वो? ऑपरेशन सॉरी he was involved in श्रीलंकन राइट्स, श्रीलंकन सिविल वॉर में उनका इन्वॉल्वमेंट था. Okay, so Dr. Manmohan Singh became the finance minister and PV Narasimha Rao became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्या से हटाने के लिए एक मनमोहन मैजिक लाया था. क्या है मनमोहन मैजिक, जरा समझ लीजिएगा. There are two important concepts which you need to understand, ma. One is called depreciation and the other is called appreciation. एक है हमारा डिप्रिसिएशन और दूसरा है हमारा अप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन या वो बात होता है जब वैल्यू ऑफ रूपी इज गेटिंग लो इन टर्म्स ऑफ डॉलर. डॉलर के तुलने में रूपी का वैल्यू जो है वो कम होते जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन. ऑपोजिट होगा, वैल्यू ऑफ रूपी इज गेटिंग इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर. रूपी का वैल्यू बढ़ रहा है, उसे हम अप्रिसिएशन कहेंगे. लेकिन अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन जो है, इट विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. मान लो इंडिया में टोमेटोस हम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये भी मान लो कि सिर्फ पूरा दुनिया में इंडिया ही टोमेटोस को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा हमारा? वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी विल गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि पूरा दुनिया देखेंगे टमाटर के लिए भारत के तरफ, और भारत का किसान सिर्फ रूपी में एक्सेप्टेंस करेंगे. ठीक है, तो अप्रिसिएशन होगा. एक और कॉन्सेप्ट हो जी, वन इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन और दूसरा है जी रीवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन का मतलब होता है रूपी का वैल्यू कम होना इन टर्म्स ऑफ डॉलर. रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है रूपी का वैल्यू बढ़ना इन टर्म्स ऑफ डॉलर. लेकिन both these are decided by the market, they are decided by the government. They are decided by the government. If wantedly government decreases the rupee value, then that is called devaluation. Increases the rupee value, that is called revaluation. तो मनमोहन सिंह के हाथ में था डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन. मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? वी आर गोइंग टू डिवैल्यू आवर करेंसी. सबने बोला मनमोहन जी को आप पागल हो गया क्या, कैसे आप डिवैल्यूएशन करेंगे, कैसे आप भारत का रुपया को कम करेंगे. ठीक है, देन मनमोहन सिंह ने बोला वेट एंड वॉच. ठीक है, डिवैल्यूएशन करने के बाद फॉरेनर्स आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. फॉरेनर्स आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद अपना इंफ्रा बढ़ेंगे, अपना सप्लाई बढ़ेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ेंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, अपना सेविंग्स भी बढ़ेंगे, और वो सेविंग्स को हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये एक प्रॉपर इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चलते जाएंगे इफ वी गो फॉर डिवैल्यूएशन. एंड दैट वाज आल्सो प्रूवन वेरी वेरी सक्सेसफुल, which was a strategy of Dr. Manmohan Singh. Now, this Dr. Manmohan Singh have said, if foreigners are coming to India, then we should not make them wait for licensing more and more amount of days. पहले क्या होता था, 60 days 65 days तक वो वेट करते थे, लेकिन उन्होंने बोला we are going to go for liberalization, यानी इजी लाइसेंसिंग मिलेंगे. 7 दिन के अंदर अंदर ही कोई भी फॉरेन कंपनी आएगा तो उनको लाइसेंसिंग मिल जाएगा. ठीक है, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट द डिसइन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट. डिसइन्वेस्टमेंट यानी टेकिंग बैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है जी? टेकिंग बैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट. कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना, दैट इन्वेस्टमेंट इफ यू आर टेकिंग बैक, that is what we call it as the disinvestment strategy. और ये जो disinvestment है, ये disinvestment complete disinvestment प्रमोट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा privatization.
PSU में मान लो कंपनी इज टेकिंग बैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इज टेकिंग बैक द इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था विल बी कंपीटिंग विद द होल वर्ल्ड, पूरा दुनिया से हम लड़ेंगे, भारत इकोनॉमी जो है वी आर ओपनिंग इट अप एंड वी आर गोइंग टू फाइट विद द होल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उनका स्ट्रैटेजी था उस वक्त, पहले डिवैल्यूएशन किया है, डिवैल्यूएशन करने के बाद उन्होंने फॉरेनर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया है। फॉरेनर्स जब अट्रैक्ट किया है ना, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने he have come up with the idea of supporting the LPG reforms. LPG reforms का मतलब होता है liberalization, privatization and globalization. What is LPG ma? Liberalization, privatization and globalization. So this LPG strategy was actually propounded by Dr. Manmohan Singh at the time. ठीक है, then if you understand, इसके बाद आया है 1992 से लेकर 1997 तक, जस्ट अ सेकेंड, 8th 5-year plan. 8th 5-year plan. Prime Minister of India at the time was PV Narasimha Rao. कुछ दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस समय प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का खासियत है, he became the prime minister for 13 days also, he became the prime minister for 13 months also, he became the prime minister for 5 long years also, ठीक है। then उसके बाद आएगा 9th 5-year plan 1997 से लेके 2002 तक। if you understand, this is such a 5-year plan where we have changed the century. सेंचुरी बदला है हमने, 19th century 20th century से 21st century पहुंचा है ड्यूरिंग दिस 5-year plan. इसके बाद आएंगे 10th 5-year plan, वो बनेंगे अपना 2002 से लेके 2007 तक। 11th 5-year plan है 2007 से लेके 2012 तक। 12th 5-year plan है 2012 से लेके 2015 तक, ठीक है। इस 12th 5-year plan के समय में है, ड्यूरिंग द 12th 5-year plan ही 2015 में हमने प्लानिंग कमीशन को हटाया, 5-year प्लान को हटाया और उसके जगह हमने नीति आयोग को ला दिया है, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसका वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड रहेंगे, ठीक है, अपॉइंटेड। अभी फिलहाल कौन है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। नीति आयोग will have a think tank that is in 2 forms. एक को हम कहेंगे टीम इंडिया हब ऑल इंडिया के लिए, दूसरों को हम कहेंगे नॉलेज इंडिया हब। नीति आयोग 15 इयर्स का एक एजेंडा डॉक्यूमेंट देते हैं। एजेंडा डॉक्यूमेंट यानी आने वाले 15 साल में भारत किस तरह से बदलेंगे, इन द 15 years to come how India will be transforming, that is known as the vision document, ठीक है। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ 2030 का विजन डॉक्यूमेंट हम उसे कहेंगे। And Niti Aayog will also be giving report on poverty of the states, unemployment of the states, social indicators in the state, ठीक है। Niti Aayog will be promoting entrepreneurs also. Niti Aayog is promoting the aspirational districts program, जो backward districts होता है भारत में, that is called aspirational districts all together. उस program को भी नीति आयोग खुद ले रहा है। एक summit हुआ था global entrepreneurship summit, that summit was also actually conducted by नीति आयोग itself. तो इस तरह के काफी अच्छा काम नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग को हम डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे क्योंकि प्लानिंग कमीशन में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन स्टेट चीफ मिनिस्टर का कोई उसमें रोल नहीं था, ठीक है जी। तो नीति आयोग में क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड
आइडिया भी नीति आयोग को हम कह सकते हैं। आई होप that you people have got this point very clear, everyone.